Good evening, dear students. Let us join. Let us join. Let us join. Spore formation. Spore formation. Mention. Put up message. Which present please mention. Okay. Spore formation. Spore formation is a type of asexual reproduction. Asexual reproduction. Spore formation is a type of asexual reproduction which occurs in the rhizophus fungus. In rhizophus fungus, like that. Asexual reproduction is spore formation, rhizophus fungus. Who are joined? Spore formation is a method of asexual reproduction in which plants like fungus, rhizophus fungus shows, rhizophus fungus, it is a fungi plant which shows the reproduction by spore formation. The spores are they produce in spore formation. The parent plant produces hundreds of spores. Here is the parent plant produces hundreds of spores of microscopic spores. Microscopic means very small size spores produced by the parent plant. Then when the spores are contained in a spore case, ये जो स्पोर गुडी को फॉर्मेशन होची ताको पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस करछ हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स. ये जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अछि एगुडो कोनती स्पोर्स. ये स्पोर गुडी को हंड्रेड्स ऑफ स्पोर गुडी को ना यार कहा भीतर अछि ना स्पोर केस भीतर अछि. चले दीज स्पोर्स आर कंटेन्ड इन द स्पोर केस. से स्पोर केस भीतर पले कोन अछि ना से स्पोर गुडी को अछि. से स्पोर को के प्रोड्यूस करछि. से स्पोर को एक पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस करछि.
ये हूँ गोटे राइजोपस फंगस गोटे प्लांट ये कौन करछि ना हंड्रेड्स ऑफ स्पोर को प्रोड्यूस करछि और से स्पोर्स आर कंटेन्ड इन द स्पोर केस when the spore case burst जते बेले ई जो स्पोर केस जदि burst हो जाए तले कोन हबो ना when the spore case burst then these spores are fall onto the ground on the ground से spores गुडी कोन हबो आसी ग्राउंड रे पड़िबो by having favorable conditions these spores are then germinate and grows into a new organism or new plant okay tale in spore formation plants parent plant produce spores hundreds of spores microscopic hundreds of spores these spores are contained in the spore case when these spore case are burst jetebale spores case ko burst heibo these spores are fed on the ground by available suitable environmental condition these spores are germinated and form new plant बुझे लगले तापर एकुडियो कोन हो पुनी नुवा प्लांट हो तले आगे ये पेरेंट प्लांट स्पोर फॉर्मेशन कला सेही स्पोर गुडी को गोटे स्पोर केस भीतर रहला ताको कहंती स्पोरांजिया सेही स्पोर केस भीतर जतो सेही स्पोर्स गुडी को रहला जतो से स्पोर केस ता बस्ट करि दिबो सेतेबेले से स्पोर्स गुडी को कोन हेबे नासिक ग्राउंड रे पड़ी जिवे तापर से ग्राउंड रे जतो सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आसी जो फेवरेबल कंडीशन पाइबो तापर से कोन हो ना से स्पोर गुडी को जर्मिनेट हेकी न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो तले एठी जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस हला उडे प्रोड्यूस हला ना फ्रॉम स्पोर्स that this process is known as spore formation तले स्पोर फॉर्मेशन करी की स्पोर को आगे फॉर्मेशन करला से स्पोर गुडी को जतो बस्ट होई की एयर रे आसी कोडी पड़ला ग्राउंड रे पड़ला सेतेबेले से गुडी को जर्मिनेट होई की न्यू प्लांट होला तले एठी जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस हला पेरेंट प्लांट रू केमि देला ना बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स then this asexual reproduction is known as spore formation by spore formation new plants also produced for example play kigre na example है ना rhizopus fungus etc different types of fungus are also reproduced by spore formation clear then तापर आस फ्रैगमेंटेशन क्लियर तापर देखिया फ्रैगमेंटेशन देखो ये फ्रैगमेंटेशन रे स्पाइरोगाइरा माने करंती फ्रैगमेंटेशन रे के करे स्पाइरोगाइरा गोटे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये होची मल्टी सेलुलर देखो ये फ्रैगमेंटेशन रे कोन हो स्पाइरोगाइरा गोटे आगे जानिचो कोथांती देखो आगे स्पाइरोगाइरा देखिया some of the multicellular organisms like स्पाइरोगाइरा having relatively simple body organization and break स्पाइरोगाइरा स्ट्रक्चर देखो Spirogaira is a multicellular organism, but its body structure is very simple body structure, not complex, but is simple body structure. How it put a multicellular organism? Yes, Spirogaira. ये कौन करे? ना ये body part जो हुए, कला when their body organization can break up easily. जे के simple body structure, due to the simplicity of structure, their body
parts break up easily. एगुड़िक इजिली ब्रेकअप हो जाए. ब्रेकअप माने फ्रैगमेंट हो जाए. ब्रेकअप माने फ्रैगमेंट खंड विखंडित हो जाए. खंड खंड अलग हो जाए. पीसेस हो जाए. माने ब्रोकन इनटू पीसेस. ब्रोकन इनटू पीसेस. बहुत गुड़े खंड खंड हो जाए. कहीं ना एमानकर सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर थिबा जोगु एमानकर बॉडी गुड़िक फ्रैगमेंट्स हो जाए बा ब्रोकन इनटू पीसेस हो जाए. से जो ब्रोकन इनटू पीसेस लाइक ए बड़ा ब्रोकन हो जिवो. पुनी ये खंड अलग हो जिवो. से भी अलग हो जिवो. ये जो रहेला ये गोटे पीस हैला, ये गोटे पीस हैला, ये गोटे पीस हैला. तमाने कंप्लीटली यार बॉडी पार्ट्स ता कोन हैला ना फ्रैगमेंट. ये गुडा हैला गोटे फ्रैगमेंट माने खंड ब्रोकन पीस. ये गोटे फ्रैगमेंट ऑफ दिस स्पाइरोगैरा. ये गोटे फ्रैगमेंट तार. ये भी गोटे फ्रैगमेंट. यही फ्रैगमेंट गुडी को कोन हेबे ना बॉडी की कंप्लीटली गोटे गोटे स्पाइरोगैरा हिची. बुझि पाइलो. ये भी सब कंप्लीटली बॉडी की गोटे गोटे स्पाइरोगैरा कंप्लीटली स्पाइरोगैरा हिची. ताले स्पाइरोगैरा गुडी करो बॉडी स्ट्रक्चर होची कोन ना ताकर बॉडी स्ट्रक्चर होची सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर. ड्यू टू द सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर they can break up easily but they can fragment easily into several pieces. सेमानकर बॉडी पार्ट ता कोन होय ना बहुत गुडे खंड खंड हो जाय इजीली. सेही जो फ्रैगमेंट्स गुडी को जो भांगी रहइतो बा ब्रेकिंग हेइतो जो पीसेस गुडी को बाय फ्रैगमेंट्स गुडी को माने कोन करंती ना ग्रोज इनटू ए कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पाइरोगैरा. यही फ्रैगमेंट्स ता बॉडी की गोटे नुवा स्पाइरोगैरा हो गेला. ये जो फ्रैगमेंट है ये जो गोटे कंप्लीट ये हला पेरेंट्स. ये पेरेंट स्पाइरोगैरा रो एमान सब फ्रैगमेंट्स हे गेले. फ्रैगमेंट माने ब्रेकिंग इनटू सेवरल पीसेस. सेही जो सेवरल पीसेस हे गेला फ्रैगमेंट्स. सेही फ्रैगमेंट गुडी को ग्रो करके पुणी हे गेले गोटे गोटे इंडिविजुअल हे गेले बा न्यू ऑर्गेनिज्म हे गेले बा डॉक्टर स्पाइरोगैरा हे गेले. तले पेरेंट रो ए जो डॉक्टर स्पाइरोगैरा हले केमे देले ना बाय फ्रैगमेंट्स. आगे से पेरेंट ता फ्रैगमेंट हैला सेवरल पीसेस हैला. से ईच सेवरल पीसेस ग्रोज इनटू ए कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तले ई फ्रैगमेंट ता बॉडी की गोटे कंप्लीट स्पाइरोगैरा हैला. यार फ्रैगमेंट ता बॉडी की ई फ्रैगमेंट ता बॉडी की गोटे कंप्लीट स्पाइरोगैरा हैला. ये फ्रैगमेंट मदो ग्रो करे की गोटे कंप्लीट स्पाइरोगैरा हैला. तले ई जो स्पाइरोगैरा हमें देखिले ये होची बाय फ्रैगमेंटेशन. तमन ता बॉडी पार्ट को से फ्रैगमेंट करेकी कोन करछे ना से तार इंडिविजुअल प्रोड्यूस करछे. देन the organism like Spirogyra and sea anemone. Sea anemone is a marine animal, but now we have to discuss about the asexual reproduction in plant and animals. Our sea animal अच्छी sea animal मतलब fragmentation process रे करे. देखिए देखो ले एग्जांपल टा ये बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर थी sea animal. ये सी एनिमल. ये सी एनिमल टे कौन हुए ये मतलब यार बॉडी पार्ट को का फ्रैगमेंटेड है कि न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए. ताकू मतलब कहते करे प्रेजेंट नाउ के प्रतिष्ठा असो आशीष बैच give attendance. Then assist present. Asu Pratishtha home base absent. Okay. Then
ये गला फ्रैगमेंटेशन तापर आसो जानिबा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन by vegetative propagation the living organism reproduced by vegetative propagation means the vegetative parts from vegetative parts means like leaves, stems, roots, etc. These are the leaf, stem, roots are the vegetative parts. From vegetative parts, the new individuals or new organisms or new plants are produced from leaves, from stems, from roots. Then what are the plants who are produced from leaves and which plants are reproduced through stems and which plants reproduce through roots? Let us Bryophyllum plant. Bryophyllum. It is a multicellular plant. These are the buds-like structures. When these leaves fell on the wet land, the third wet land fell on wet land, then it arises from leaves bud. From leaves bud, a new bryophyllum plant is arises. केतेबेले नाही केतेबेले एई जो बड्स गुडको बाच लीफ रो एई का जेतबेले पड़ी जो गोटे वेट लैंड रो फेवरेबल कंडीशन रे सेतेबेले आ गोटे नुवा प्लांट प्रोड्यूस हो ब्रायोफाइलम से जो नुवा प्लांट टी प्रोड्यूस हो सेटा कहला ब्रायोफाइलम रे एटा हला कोन ना लीव्स रो प्रोड्यूस होची लीव्स गोटे कोन वेजिटेटिव पार्ट से पे कहला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ताले जो प्लांट गुडी को लीव्स रो रिप्रोड्यूस होंती तार प्रोसेस होची सर तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो प्रोसेस होची वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ताले स्टेम रे जानिछो स्टेम रे बहुत गुडे अछि देखो सेवला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आउ के अछि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रे और बहुत गुडे प्लांट अछि ताले आमे आगे देखिया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रे को मान अछि The green grass grows in the field after rain from the dry old stems of a grass plant present in the fields. देखिए तो green grass गुड़ी का थाए field रे एम तो बहुत गुड़े कौन थाए grass उठी थाए green grass गुड़ी का ये grass गुड़ी का आस्ते कौन है जाए हमें कौन थे घास गुड़ी का जो मरी जाए कहते हैं समर सीजन में देखिए ये grass गुड़ी का नथी हो grass गुड़ी का नथी means यार leaves गुड़ी का पड़े थो तला लीव्स गुडी सब सुखी जाइतो ड्राई हे जाइतो किंतु तांकर कोन रहि जाइतो देखो ओल्ड स्टेम्स या जो ओल्ड स्टेम गुडी को रहि जाइतो कोडी ऑन द ग्राउंड ये जो इन द ग्राउंड भीतर रहि जाइतो ये जो कोडा ओल्ड स्टेम गुडी को अपर पार्ट गुडी को ड्राई हे जाइतो सेहि पय समर सीजन रे देखिबो जोडा ग्रासी ग्राउंड जमा ग्रासी आ देखा जाय ग्रीन देखा जाय काहे कि ना से लीव्स गुडी को सब ड्राई हे के सुखी आइतो आ सब देखा दिबो किंतु सेते बेले त तळे माटी तळे अंडर द सॉइल कोन रे आइतो ओल्ड स्टेम गुडी को थिबो पुन जेतळे रेनी सीजन आरंभ हो जो वर्षा आइतो सेही देखो पुनी ग्रीन देखिबा आरंभ हो कोठी सेही ग्राउंड रे बा लैंड बुझि पले ना नहीं तले आमे तो देखुचंती ग्राउंड को समर सीजन रे से ग्राउंड रे कोन होची ना से ग्रास गुडी को ड्राई हे की अब देखो when से ग्राउंड रे ग्रो है ग्रास ए धर के समर सीजन आसला ए ग्रास गुडी को ड्राई हे गला वर्तमान से ग्राउंड का ग्रासी देखा जिवो कि ग्रीन देखा जिवो कि समर सीजन रे देखा जिवो कि जेतरा कोन रेन सीजन आसी जिवो किंतु सेसना ड्राई हे गला लीव्स गुडी पड़ेला किंतु तार जो स्टेम गुडी को माटी तळे थिला से गुडी को तो रही छी सॉइल तळे पुन जेतले रेनी सीजन आरंभ होला
से रेनी सीजन बेलू कौन है ना से जो ओल्ड स्टेम गुड़ी का पुणी कौन कला नुआ ग्रास क्रिएट कला तापर पुणी हमको ग्रास देखाला ताले एई जो न्यू प्लांट की प्रोड्यूस हला कोठू स्टेम रहला ताले स्टेम गोटे वेजिटेटिव पार्ट ताले ग्रास रो जो रीजनरेशन होची सेटा हला फ्रॉम स्टेम ताले स्टेम इज ए वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट सो दिस इज आल्सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट्स देखो बाय रूट्स रे जानि छ बले बहुत गुडे रही छी तापर आसा रूट पूरा कुछ ये पोटैटो जानि छ potato tuber can be used for the vegetative reproduction of a potato plants गोटे पोटैटो को देखो से भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन ले करछ गोटे पोटैटो रे एगुडा सब थाए एगुडा कोनती बर ए गोटिए बर रो देखो एटा हला ओल्ड पोटैटो ट्यूबर एटा ओल्ड पोटैटो ट्यूबर एटा हम कोन करले सॉइल डे डिप कर देले सॉइल डे कर देले तापर कोन हला ना एक छोटे न्यू पोटैटो new potato plant growing from bud ए जो बड रो एगुला बहुत बड अछि ए बड गोटे न्यू पोटैटो प्लांट का करला ग्रो करला तने बड पे ग्रो करला ये गोटे वेजिटेटिव पार्ट है तने ये भी मतलब पोटैटो रो मतलब करला ये भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन रे रिप्रोडक्शन कर तापर I would have money plant can also be grown by vegetative propagation by using a piece of stem. Money plant देखिथिबो money plant रे गोटिए पीस नै आस्तिबो तार स्टेम सेही तरह से बड़ी बड़ी के बहुत बड़ा ही जो मनी प्लांट गोटिए स्टेम आछो से स्टेम रु कटिंग करिकी से स्टेम रु आउ गोटे मनी प्लांट कोन करिवो produce होगा then stem leaves root buds these are the vegetative parts of a plant from these parts new plants are produced so this method of the mode of asexual reproduction is called vegetative propagation why this is called vegetative propagation because of the new plants are produced from the vegetative parts of a plant like some plants produce from leaves is a vegetative part some plants produce from stem some plants produce from bud some plants produce from roots so that is why plants are produced from vegetative parts of a plant then this process is known as vegetative propagation it is a asexual reproduction then artificial vegetative propagation artificial vegetative propagation देखो अरे वीडियो क्लियर हो जे आशीष आशो प्रतिष्ठा ओम मैसेज करो वीडियो क्लियर हो कि नहीं तापर देखो आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स ये जो आर्टिफिशियल प्रोपागेशन प्लांट माने ये गुडी तो नेचुरली होतला वेजिटेटिव प्रोपागेशन ता नेचुरली होतला आर्टिफिशियल आमे ताकू करला से माने आपे आपे पत्र होतला जेंति ड्राई पाइलम आ स्टेम रे जेंति होतला के मनी प्लांट सेटा नेचुरली आपे आपे हिजो किंतु आमे ताकू जबरदस्ती करिवे आर्टिफिशियल
vegetative propagation. Vegetative propagation. The artificial vegetative propagation by means of three cutting. Second one is layering, and third one is grafting. We can grow many plants from one plant by using the man-made method. Man-made method. जो artificial vegetative propagation होची, एटा हला human-made method of asexual reproduction होया. New plants are produced. The artificial vegetative propagation is a human-made asexual reproduction of plants. Plant मानकर जो asexual reproduction अच्छी, ये होता है ला artificial vegetative propagation टा ला human-made. एटी आमे माने तंकु करांती reproduction plant मानो by cutting, layering and grafting. तले cutting करांती कहाँ को? ना किसी plant देखी थी वो ताको काटी दे के आने के लगे रहता है काटी दे किसी पार्ट वो गुड़ी का देखिए आगे देखो कटिंग रे देखो ये स्मॉल पीस ऑफ रोज करता देखी तो देखो एटी गोटे प्लांट रहला एक पोर्शन टा में काटी दी एटी कटा है एटी गोटे बॉक्स थी आस्ते आस्ते ये बॉक्स टा कौन हबो सेटा गोटे सूप हे कि बाहर तले ये बॉक्स टा कौन हला ना गोटे सूप हे कि बाहर देखो एटा गोटे बॉक्स थिला एटा में काटी देछन प्लांट को कटिंग कर देले कटिंग करला पर ए जो बॉक्स गोटे थिबो ई बढिया से बॉक्स टा आस्ते आस्ते कोन कला ग्रो कर शूट पार्ट हे लाइट बर्तन ये बर्तन को पार्ट हे गेला शूट पार्ट और ये तो तार रूट्स थिला तळे ना तले एटा में काटी देला पर ए जो थिला गोटे बॉक्स ए बॉक्स रो गोटे शूट पार्ट हेती ग्रो करी के जिवो से ग्रो होला पर से पूरा कंप्लीटली थर्ड स्टेज रे कोन हबो से पूरा चारियाडे बड़ी देखो तले एथि कोन थिला एटा को काटी देले गोटे प्लांट रो पूरा तार शूट रो आधा काटी देला पर एठी गोटे तळे गोटे शूट थिबो एठी थिबो ना एठी थिबो सेही शूट टा कोन हबो आफ्टर सम डेज सेही गोटे शूट बॉडी चलिबो सेहीटा पुनी ग्रो करी गोटे कंप्लीट प्लांट हेतिबो सेही कटिंग करला पर भी मध्य से तार कटिंग पार्ट को मध्य कोन होची आ गोटे न्यू प्लांट ग्रो करछि सेटा ला कटिंग मेथड सेटा गोटे आर्टिफिशियल आमे ह्यूमन मेड मेथड तापर देखो बेटी कोन हला ए जो स्टेम कटिंग हला ये स्टेम टा कोन कला डेवलप हला तार रूट्स डेवलप हला तार शूट पे डेवलप हला शूट पार्ट डेवलप लेकी गोटे न्यू प्लांट फॉर्मेशन हला एटा हे गला गोटे न्यू प्लांट को कहला न्यू प्लांट ना ई कटिंग हला बुझला तापर आसा तले ए जो मेथड है cutting of the parent plant कोडी कटा दे of stem or shoot either stem काटी दबा न तार shoot part cutting कर दबा having some buds on it is taken the lower part of buried in the moist soil देखो तला हमें तर को जगह रे कट करबा ना ए जो मेथड रे कटिंग ऑफ द पेरेंट प्लांट स्टेम हो बा शूट हो having some buds on it and it is taken and its lower part is buried in the moist soil after few days the cutting develops root and shoot and grows into a new plant
cuttings are a means of asexual reproduction in plant. The new plants are formed. A cutting is exactly similar to the parent plant. वो माने ना रोज, बोगनवेलिया, ग्रेप्स, बनाना एवढा होची कटिंग. एमाने तो कटिंग करा जाए. गोटे मॉइस्ट सॉइल ले पोता जाए. ओदा माटी ने के गुड पोता जाए. आ ता भीतर गोटे बॉक्स थिबा दरकार. जोटा हम कटिंग करचंती बॉक्स थिबो ताको कटिंग करके गोटे ओदा माटी रे मॉइस्ट सॉइल ले पोती जा देबो. तापर सेही बॉक्स आफ्टर सम डेज सेही बॉक्स ता कोन हो डेवलप हो. शूट पार्ट डेवलप हो यार भी मदर रूट पार्ट डेवलप हे की जिवो. तापर से शूट पार्ट ता कोन हो डेवलप हे की गोटे न्यू प्लांट हैला. तले एठी जो न्यू प्लांट ता प्रोड्यूस होला फ्रॉम कटिंग वो माने करंती ना रोज बोगनवेलिया बनाना एटसेट्रा एमान होजंती बाय कटिंग. एमाने कटिंग प्रोसेस रे रिप्रोडक्शन करंती. तापर आसो लेयरिंग. सेकंड टा कोन देखबा लेयरिंग. ए लेयरिंग रे को माने करंती देखो. Layering a conveyor. In this method, a branch of the plant is pulled towards the ground and a part of it is covered with moist soil, leaving the tip of the branch exposed above the ground. After some time, the new roots will develop from the part of the branch buried in the soil. एठी गोटे देख ए जो प्लांट की कहला लेयरिंग रे कोन हुए एठी अछि सॉइल ड्रिल एठी प्लांट की आर अछि एटा से प्लांट रो रूट्स ए प्लांट्स दे रहला ए प्लांट्स रो गोटी ब्रांच कोन करा दियो ना डाउन करा दियो कोठी ए सॉइल माटी तो एवढा तर एवढा गोटे ब्रांच को टान यार भितरे ए जो ब्रांच रो टिप टाकू एक्सपोज करा दिबो ऊपर आ गोटे पोर्शन रहला तळे ए जो तळे रहला ए जो कोन हो ना ता रूट्स फॉर्मेशन हो आ एटा तार सूट नहीं कि बॉडी चेंज बॉडी के आउट एंड प्लांट हितो सिमिलरली एठी कोन हला ना जो पोर्शन टा एठी अंडर द ग्राउंड रे रहला सेठी रूट फॉर्मेशन हला आ जोटा एबव द ग्राउंड रहला सेठी सूट बॉडी बॉडी की गोटे नुवा प्लांट हेला एई जगह आ गोटे नुवा प्लांट हेला एई जो ब्रांच पे पामे आनी कि माटी रे अधा लगितले ऊपर टा रहला बाहर एटा गोटे ब्रांच ताको टाणी आनले तार अधा को माटी रे पुतिला आ तार अपर पार्ट को एयार एक्सपोज करले एई जो पार्ट टा माटी तळे थिला सेठी कोन हला रूट फॉर्मेशन हला रूट्स हला आ अपर पार्ट टा कोन हला बॉडी बॉडी की शूट हेला शूट हे की गोटे न्यू प्लांट रे कन्वर्ट हेला एवडा जेतरा ब्रांच थिबे तामे तार करदो तार म्हणजे गोटे प्लांट रो हमें न्यू प्लांट प्रोड्यूस करि परबो तले ए जो लेयरिंग प्रोसेस होची ना गोटे ए ब्रांच ऑफ ए प्लांट इज buried in the soil ताको आनी के माटी रे पोतिबा एंड एक्सपोज द अपर पार्ट ऑफ द ब्रांच टू द एयर एई जो ब्रांच रो अपर पार्ट टा को माटी रे पोता जो अपर पार्ट टा एयर को रखा दिबो तार मिडिल पोर्शन टा कोन करबा ए जो buried कर द माटी तळे पोति द जोटा buried द soil जो द पार्ट ऑफ द पोर्शन व्हिच इज buried in the soil from this part roots are arises and above the soil the tip of the branch is converted into shoot of the plant then they grow into a complete plant this process is known as layering तले what is grafting the layering को माने करते देखो देखो पहले लेयरिंग रे चाइना रोज हिबिस्कस लेमन जोड़ा चाइना रोज हिबिस्कस एगुडी को होचंती कोन और जस्मिन एगुडी को सब होचंती बाय लेयरिंग तापर आस ग्राफ्टिंग थर्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कोटा ग्राफ्टिंग देखो से ग्राफ्टिंग रे कोन हो थर्ड टा पढिबा हम बताने ग्राफ्टिंग तले ग्राफ्टिंग रे कोन करा जाय ग्राफ्टिंग इज ए मेथड इन व्हिच the cord stems
of two different plants, one with roots and other without roots, are joined together in such a way that the two stems join and grow as a single plant. This new plant will have the characteristic. Okay, so এটা ଗୋଟେ plant ଅଛି এই plant ର এইগুলা ଅଛି plant ତାକୁ ଆମେ କାଟିବା এই portion ରୁ କାଟିଦବା imagine କର ଏଇଠୁ କାଟିଦେଲେ plant এইটা ହେଲା এইটাକୁ କହନ୍ତି କଣ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ହେଲା କଟ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଅଫ୍ ଆନାଦର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଷ୍ଟେମ୍ ଅଛି ତାପରେ ଗୋଟେ को ଗ୍ରାଫ୍ଟ କହନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଟ୍ ଗୋଟେ କହିବା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ତାର ରୁଟ୍ସ ଥିବ देखो ये प्लांट रे एटा भी कट है ये गोटे प्लांट ये गोटे अनदर प्लांट ये जो प्लांट रो कट है ये जो शूट टा ऐसे के एटी कोन करा दिबो लगाइ दिबो ए शूट को कहंती सायन कोन कहंती सायन अब जे रही जी ताको कहंती स्टॉक एटा हला स्टॉक बर्तमान ये स्टॉक रहला ये जो सायन शूट टा को कटा हला एटा आनी एटी कोन करा दिबो कनेक्ट करा दिबो बुझला केमिति ना द कॉस्ट एमिति जॉइन करा दिबो गोटे सिंगल प्लांट करा दिबो ये होची गोटे प्लांट रो शूट ये आ गोटे प्लांट रो स्टॉक माने ये होची स्टॉक ये होची ग्राफ्ट ठीक रही छी ये ठीक ठीक रही छी आ गोटे प्लांट रो शूट को बा सायन को एसीआई ओए ताको काटी कानी के एटे एमिति भाबरे फिक्स करा दिबो एडी आनी के फिक्स करा दिबो जेमिति ये कोन हिची ना गोटे प्लांट भलिया है कि बढ़िबो त माने ये गोटे प्लांट रो ग्राफ्ट जे रहला एबडा ग्राफ्ट रहला आ गोटे प्लांट रो जो सायन एससीआई ओएन को है सूट को काटी कानी या से एमिति जॉइन करा दिबो जेमिति से गोटे प्लांट भाबरे ग्रो करिबो एज ए वन प्लांट ग्रो करिबो तले एटी स्टॉक रहला एटा रहला सायन बस सूट आ गोटे प्लांट रो स्टॉक आउ सायन मिश्र की गोटे प्लांट है कि बढ़े तो एटी द कॉट स्टेम ऑफ ए प्लांट हैविंग रूट्स इज कॉल्ड स्टॉक एटा हला यार स्टेम कटिंग है छी जार रूट्स रही छी ताको कहंती स्टॉक आउ जार कोडा कटा है द कॉट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट विदाउट रूट्स ताले यार कोन रूट छी द कॉट स्टेम ऑफ स्टेम ऑफ अनदर प्लांट which without roots जोटा कट स्टेम कोन है स्टेम कटिंग है से स्टेम कटिंग रो रूट्स नाही सेटा कोनती सायन ताले एटा आसी जे एटी कनेक्शन है सायन टा कनेक्शन है कोठी ड्राफ्ट बा स्टॉक रे स्टॉक होची गोटे स्टेम कटिंग ऑफ ए प्लांट विथ रूट्स जो प्लांट रो स्टेम रो रूट्स थिबो ताको स्टॉक बा ड्राफ्ट कहन से ग्राफ्ट सहित बा स्टॉक सहित किया से कनेक्टेड हबो ना सायन से कनेक्टेड हबो से सायन ता किए ना तो सायन इज कटिंग ऑफ स्टेम विदाउट रूट्स जो कटिंग ऑफ स्टेम जो स्टेम कटिंग जार रूट नथिबो सेटा को सायन कहबी से सायन ता जाय कि गोटे स्टॉक पाखरे कनेक्टेड हबो कनेक्टेड है कि से तापर कोन करबो ग्रो करे कि गोटे कंप्लीट प्लांट हबो एटा को कहंती ग्राफ्टिंग प्रोसेस कौन कहते ग्राफ्टिंग तले ग्राफ्टिंग is an artificial vegetative propagation then tissue culture देखा आज पहले शब्द का asexual reproduction टिश्यू कल्चर पढ़े देले सरी जीवो टिश्यू कल्चर रे एंसेंट्र अच्छी प्राय अल्प अच्छी देखे तो तापर asexual सरी गेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा जो प्लांट टिश्यू कल्चर ये जो टिश्यू कल्चर है कौन करा जाए देखो टिश्यू कल्चर है the production of new plants from a small piece of plant tissue
or cell removed from the growing tips of a plant in a suitable growth medium called culture solution or tissue culture. Tissue culture next class program.